one. Until and unless someone renames himself or herself as the real one, we won't know who that someone is. Okay, so the participants have the permission to rename themselves for the next 2 minutes. So someone, Namka student, please rename yourself or else you'll be removed from the meeting. Lakshya Sharma, hard luck. I shared the model answer paper before you could draw something on the whiteboard. Okay, so can we all begin our videos? Good afternoon, everyone. At least can I have a couple of videos on, please? एक दो videos on, please. So that I can rightly say good to see you. Okay, at least bother to answer in the chat box. Yeah, unmute, okay, you can answer too. You'll have to raise your hand. Okay, let's begin. So we are here to discuss the second CCT paper of history and political science, which also had one chapter from economics. So the portion was history 1 or 2 and economics chapter number 1. So let us begin with the MCQs. So first MCQ ka, the incorrect, you were supposed to identify the incorrect sentence, right? So the incorrect sentence is D, the development of nations must be decided only on the basis of income. तो अगर ये incorrect है, by the way, so is there someone who can raise hand and come ahead and कोई बता सकता है कि इसका correct क्या होगा? It would be exactly the opposite से sentence को reframe करना है. So who can correct it? Rigved, can you give a try? So the development level of nations must be decided only on the basis of income. So it's not only on the basis of income. Apart from that, और भी कुछ characteristics, features हो सकता है ना? So which can be those characteristics? Can you send the answers in the chat box? Apart from income, development level of the nations और किन features से determine होगी? Can I get you answers in the chat box? सुनाई दे रहा है ना सबको? Okay. ठीक है. So I have got few answers and यहाँ पे someone says कि development level of nations income के अलावा literacy level से भी determine होती है. That's the correct answer. Literacy level के अलावा what else do I have? Someone in the chat box has sent education and healthcare as well. So these are the answers. Okay, so D, option D is the incorrect sentence.
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में वन ऑफ द क्वेश्चन वाज फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया एंड उसके अगेंस्ट देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम नेशनलिज्म इन यूरोप. So, in which state is Champaran? The correct answer is Bihar. अब who can tell me कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में, it was against dash. Is there anyone in this session who can answer my question? चंपारण सत्याग्रह in Bihar was against the cultivation of dash. मैंने cultivation word भी बोल दिया, अब कोई बता सकता है? Let me give you permission to unmute yourself. So now can anyone come ahead and answer? Arush, I believe you have scored 25 on 25. Can you answer this question? Bihar mein Champaran Satyagraha was against the cultivation of dash. You can also send the answers in the chat box. Okay, I got the answer in the chat box. And one of the students says peasant Satyagraha. No, it was not peasant Satyagraha. Champaran, Bihar mein the Satyagraha was against इंडिगो कल्टीवेशन. एक और स्टूडेंट ने बोला ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स. ऑपरेसिव प्लांटेशन यस, बट इट वाज अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. सो चंपारण, बिहार एंड इंडिगो साथ में याद रखो. एंड ये मैप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो कीप दैट इन माइंड. देन what was Zollverein? This is from nationalism in Europe. Zollverein was nothing but a customs union. So option B is the answer. देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3A, अगेन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अभी इसमें सामने ही दिख रहा है आंसर ऑप्शन सी. इन 1921 गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस? 1921 इनकरेक्ट है, महात्मा गांधी इनकरेक्ट है, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनकरेक्ट है? सो हु कैन आंसर दिस वन? यू कैन सेंड मी द आंसर इन द चैट बॉक्स टू. सो मानवी, आदित्य, रेहान, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी एक्टिव है इन द चैट बॉक्स. सो गुड दैट यू आर सेंडिंग द आंसर्स. सो हु कैन सेंड मी द आंसर फॉर दिस वन? 3A में ऑप्शन सी, इन 1921 गांधी जी डिसाइडेड टू एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें इनकरेक्ट क्या है? कोई बता सकता है? कोई सेंड कर सकता है आंसर इन द चैट बॉक्स? डू आई हैव द आंसर हियर? यस. ओके, सो as rightly answered by one of the student, 1921 में नहीं, गांधी जी decided to withdraw the non-cooperation movement in the year 1922. Okay, एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा गलत टाइप किया है. द स्टूडेंट सेज इट वाज द ईयर 1920 जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म किया. सो इट वाज नॉट 1920, इट वाज 1922. देखो, इजी तरीका टू रिमेम्बर इज एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज. यहाँ पे रिमेम्बर एनसीक्यू, wherein N stands for non-cooperation movement, C stands for civil disobedience movement, and Q stands for quit India movement. And in तीनों के starting के years क्या है? 1920, 1930, 1942. So NCQ 20, 30 and 42. ओके, ये स्टार्ट वाले years है. अभी विदड्रॉ एंड वाले इयर्स नॉन कोऑपरेशन का अभी मैंने जस्ट बताया ईयर कौन सा है? 1922. ओके, एंड हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? 1922 में गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था. वो इंसिडेंट, व्हाट इज दैट इंसिडेंट नोन एज? व्हाट इज इट नेम्ड एज? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? एनीवन रिमेंबर्स? कैन एनीवन आंसर इन द चैट बॉक्स? C and C कुछ तो था. The state was Uttar Pradesh. It was something related to a police station. Can someone type and send the answer? Samarth is a new name in the chat box, so good for being very active. So Samarth says police station was burned and inspectors were fired at. ऐसा कुछ तो भी. But place का नाम CNC क्या था? It was Anushka. Is the first person to send the correct answer. Very good, Anushka. The correct answer is चौरी चौरा. चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था जिससे गांधी जी डिसाइडेड टू एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. फिर उसके अगेंस्ट दूसरा क्या है? विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन?
So the correct answer is Treaty of Constantinople. अब इसमें ना जितने मैंने पेपर्स करेक्ट किए उसमें एक दो पेपर्स ऐसे थे जिसमें ना स्टूडेंट्स ऑप्शन से स्पेलिंग देख के भी इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं, तो उस बात का प्लीज ध्यान रखो। कॉन्स्टेंटिनोपिल है वो, कॉन्स्टेंटिनोपोल नहीं है। सो कुछ स्टूडेंट्स पीओएल लिखते हैं, सो इट्स कॉन्स्टेंटिनोपिल। फिर अहमदाबाद में भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, तो वो ऑप्शन में अगर दिया हुआ है स्पेलिंग तो कॉपी एज इट इज। अब नेक्स्ट, which methods, question number 4, which methods were used by Gandhi ji to fight against British? तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्ट्राइक एंड वेंजेंस तो होगा नहीं गांधी जी के लिए, ना ही सिविल वॉर या फिजिकल फोर्स। तो द ऑब्वियस आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। फिर क्वेश्चन 4 बी जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, मैंने जो पेपर्स करेक्ट किए उसमें मेजोरिटी व मिस्टेकन हियर। द क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय पीपल इन गलीशिया? So this is in nationalism in Europe, and Galicia में the language that was spoken was Polish. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इटालियन लिखा, जर्मन एंड फ्रेंच तो कहीं पे वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, सो पॉलिश इज द करेक्ट आंसर। ओके, इटालियन में वेनिशिया आया ना, VENETIA। Okay. Good that you all are sending me the answers in the chat box. अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 AR टाइप क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी। इट सेज डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस मस्ट नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अलोन। सेंटेंस तो सही है, अब क्या द नेक्स्ट स्टेटमेंट रीजन है उसका? इट सेज डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय बाकी का भी एट्रीब्यूट्स ना, लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा, इसलिए डेवलपमेंट शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अलोन। तो द करेक्ट आंसर इज दोनों भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो yeah, most of the students did this correctly. Then question number 6 क्या है? Which of the following statement has state? Which of the following state has a low infant mortality rate? The correct answer is Kerala. Most of you got this correct. Question number 7 onwards start with the 3 marker questions. So 3 marker questions में you had options, economics chapter 1 से related. Why is per capita income not decided, not considered to be the best criteria? And दूसरा is development is a mix of goods. अब ये इसमें जनरली स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक क्या करता है पर कैपिटा इनकम वाले आंसर में? पॉइंट नंबर 1 अच्छे से लिखता है, पॉइंट नंबर 2 अच्छे से लिखता है कि और भी है एट्रीब्यूट्स। ऊपर एमसीक्यू से भी हम सेम पॉइंट उठा सकते हैं, राइट? तो वही काफी स्टूडेंट्स ने किया एंड एमसीक्यू का सेम पॉइंट उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे केरला एंड ये हरियाणा वाला एग्जाम्पल मिस किया। सो इवन दो द क्वेश्चन इज ऑफ 3 marks, यू आर सपोज टू राइट द एग्जाम्पल एज वेल। ओके, फिर डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स में अगेन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है ना उसमें एग्जांपल्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स में, और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ओके, बट वो डिफरेंट गोल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा एंड अलग अलग लोगों के लिए गोल्स अलग अलग रहेंगे, वो सब कुछ ऐड करना इज नेसेसरी। तो यहाँ पे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, पीस, हार्मनी वगैरह लिखा है, जितने भी सारे वर्ड्स आर मेंशन इन द नोट्स और टेक्स्ट बुक, यू नीड टू मेंशन देम. There's very limited content. Then moving ahead, non-cooperation movement in towns slowed down for a variety of reasons. So इसमें मैंने देखा couple of students ने non-cooperation movement के बारे में beginning में बड़ा डिटेल में लिख के रखा था, non-cooperation movement in towns के बारे में कि who were the participants and which were the methods used. So वो सब is not necessary to write. हमको आंसर लिखना है एकदम to the point. तो सीबीएसई में 3 marker क्वेश्चन हो या 5 marker क्वेश्चन हो, तो वो 3 sentences या 5 sentences हम जो भी लिखते हैं, द आंसर शुड बी टू द पॉइंट। इनफैक्ट यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट्स है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। एक, खादी वाज ज्यादा एक्सपेंसिव तो पीपल प्रेफर टू बाय द मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड दूसरा क्या था? ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, यू रिमेम्बर ब्रिटिश वाला इंस्टीट्यूशंस बॉयकॉट कर दिया स्टूडेंट्स, लॉयर्स वगैरह वगैरह ने, तो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम अप। तो अभी दीज आर दी 2 main points, तो 1.5 करके मार्क्स डिवाइड होके वहां पे तुमको दिए जाते हैं। ऑल्सो डू यू सी हियर की कीवर्ड्स हैव बीन अंडरलाइंड? ऐसे ही हमको पेपर में भी करना रहता है, व्हेन वी राइट द आंसर वी नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑल्सो।
ओके। उसके अगेंस्ट यूरोप का कौन सा क्वेश्चन है? व्हाई वाज देयर अ चेंज्ड रिएक्शन टुवर्ड्स फ्रेंच आर्मी अंडर नेपोलियन? अभी इसमें भी many of you have written point number 1. Some of you did not write point number 1, so that's completely okay. मेन आंसर हमारा कहाँ पे है? हमारा मेन आंसर जो है इज इन पॉइंट नंबर 2. सो यहाँ पे ये दिख रहा है, initial enthusiasm soon turned into hostility towards Napoleon का army. What was the reason? क्योंकि there was lack of political freedom, then increased taxation, क्योंकि he was fighting many wars, he was invading many other regions, censorship of course, क्योंकि policies turned into dictatorship, और forced conscription into French armies. Conscriptions मतलब recruitment, appointment into French armies. ओके, सो ये अगर चारों पॉइंट्स भी मेंशन है ना हमारे आंसर में, तो भी यू विल गेट 3 out of 3 मार्क्स. देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क कौन सा है? एक इज राउलेट एक्ट एंड दूसरा इज उसके अगेंस्ट नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स. सो व्हाट इज राउलेट एक्ट? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट used its power to repress or to stop the political activities and allow the detention की जगह पे arrest लिखा तो भी चलेगा, of political prisoners without any trial. उन पे कोई केस भी नहीं कर सकता for 2 years. So ये पूरा सेंटेंस जो अंडरलाइन है, ये as it is should be mentioned in the answer because that's one of the main feature of the Rowlatt Act. अभी what was the response of Indians and what was the consequence? So यहाँ पे we will skip Indians response because question में क्या पूछा हुआ है? State any 2 consequences, right? So let's move down to the consequences. Consequences में there was हड़ताल. If you remember, 2 dates हैं, 10th of April and 13th of April. So 10th of April में पुलिस ओपन फायरिंग होता है अमृतसर में, and 13th of April जलियनवाला बाग मैसेकर as a consequence. Okay, so ये दोनों पॉइंट्स अगर हमने मेंशन किए तो भी इट्स इनफ, बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस में डेट्स आर इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है. ओके, अब नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स. कंजर्वेटिव यूरोपियन नेशनलिज्म से आया. कंजर्वेटिव वर्ड का ही मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव्स आर दोस जो ऑर्थोडॉक्स सोच वाले होते हैं, एंड वो सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दे विल सपोर्ट मोनार्की एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक तो दे वर ऑटोक्रेटिक, वेरी स्ट्रिक्ट, क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करना, एंड दे विल कर्ब और स्टॉप एवरी एक्टिविटी दैट विल क्वेश्चन देम. ओके, क्योंकि मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं. एंड दे ऑल्सो इम्पोज सेंसरशिप लॉ सिमिलर टू नेपोलियन बोनापार्ट वाला. ओके, देन अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ. 5 मार्कर क्वेश्चन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशंस. अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट. ये एमिग्रेशन का स्पेलिंग देख लेना, ई डबल एम नहीं है, या आई एम या आई डबल एम नहीं है. So the spelling has to be as it is. ये एक एक्ट का नाम है. Also year. अब एक पेपर मुझे याद है, वो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट को ईयर याद नहीं था एक्ट का, तो उसने जस्ट मेंशन किया इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, बट वो एक्ट का नाम ही इनकम्प्लीट होता है. इट हैज टू बी पूरा. तो जहाँ पे डेट जरूरी है वहां पे जरूरी है. ठीक है, कहीं पे अगर हमको डेट नहीं पूछा एंड याद नहीं आ रहा है तो हमको वो मेंशन करना जरूरी नहीं होता, बट यहाँ पे एक्ट में डेट मेंशन करना इज वेरी नेसेसरी. एंड द ईयर इज 1859. एंड आसाम का वो प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में तुमको लिखना है. एंड टुवर्ड्स द एंड दे रियलाइज, दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, सो they started going to their own villages, but unfortunately they had to come back, and they were brutally beaten up by the police. And why did they get stranded on the railway side? Because later on they realized कि railway workers भी strike पे गए थे. So ये सब कुछ mention होना है जरूरी. 5 marks का आंसर है. अब यहाँ पे you won't find total 5 points, 3-4 points ही है, but पूरा जो इंसिडेंट है मेंशन किया हुआ वो पूरा कवर कर रहा है आंसर. तो इतना अगर हमने लिखा है अपने आंसर में तो यू डू गेट 5 out of 5 marks. ओके,
अब एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलिज्म वर्ड का हम मीनिंग लिखेंगे. सो जैसे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इट मीन्स टू बी फ्री, लिबर्टी, लिबर. एंड देन पॉलिटिकली, लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर पूछा ना, तो पॉलिटिकली इट मीन्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट, नथिंग बट डेमोक्रेसी टाइप एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है? वोटिंग होता है, राइट्स होते हैं, इक्वालिटी इंश्योर्ड होता है. तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग विथ फ्रांस का एग्जाम. ये फ्रांस का एग्जाम्पल अगर हमने शॉर्ट में भी लिखा है तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, देन मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. क्या है? व्हाई डज द, ये एक ही अकेला था ना इसमें, यू डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन. व्हाई डज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट टेंड टू वेरी, चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? अब यहाँ पे भी अगेन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल स्टेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे भी देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका भी मैंने पेपर करेक्ट किया हैड मेंशन्ड दिस एग्जाम्पल. अ फार्मर, ट्रेडर, अ टीचर, सबका जो भी चाहत होगा अपने डेवलपमेंट के लिए एंड टुवर्ड्स द नेशन, वो सब अलग अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ विच दे वुड नीड गवर्नमेंट टू फॉर्म द पॉलिसीज. बट अल्टीमेटली नाउ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्ड द लास्ट पॉइंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड अगर लास्ट पॉइंट नहीं लिखा होगा तो फिर 4 या 4.5 मार्क्स मिले होंगे. सो द लास्ट पॉइंट सेज कि गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे लोगों की बातें, पहले तो लोगों की बातें सुनते हैं एंड फिर प्रायोरिटी के बेसिस पे दे ट्राई देयर बेस्ट टू सर्व और बेनिफिट लार्जर नंबर ऑफ पीपल. ओके, तो प्रायोरिटी अगर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में फार्मर्स है तो उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाए जाएंगे. प्रोबेबली टीचर्स वुड कम लेटर एंड ट्रेडर्स वुड कम लेटर, उस हिसाब से. सो नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज प्रायोरिटी गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा लोगों की डिमांड्स सुनने के बाद. तो वो वाला पॉइंट भी आना चाहिए आंसर में. सो ये सब हो गया. अब आई वुड लाइक टू शेयर एक one of the student का paper so that you can have a look at the presentation and other things. And in the meanwhile, if you have any doubts, you can feel free to send them in the chat box. Okay, so let me share that paper once. Here we go. Okay, so this student has scored 25 on 25. And यहाँ पे कैन यू सी एमसीक्यूज का आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी. एंड ऑप्शन डी लिखने के बाद अगेन जो करेक्ट ऑप्शन का आंसर है वो भी लिखा हुआ है. सो यू नीड टू स्टेट दैट टू. सो ये सारे 6 एमसीक्यूज हो गए. अच्छा, द सिक्स्थ एमसीक्यू was given on the next page of the question paper, and there was only one such paper out of the लॉट दैट आई करेक्टेड. एक पेपर ऐसा था जिसमें 5 एमसीक्यू स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए थे एंड नेक्स्ट पेज का ऊपर वाला 6th एमसीक्यू मिस हो गया था एंड डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया था. तो वो प्लीज एक अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड सबमिट करने से पहले चेक द पेपर वेदर यू हैव अटेम्प्टेड ऑल. ये आगे के 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के क्वेश्चंस. कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? द आंसर इज रिटन इन पॉइंट्स. द हैंडराइटिंग इज गुड. This is you Napoleon wala answer. It's almost word to word. There are hardly any cancellations. Okay. ठीक है. सिर्फ एक छोटी सी बात that's missing, which
we generally ask the students to do in their paper is to underline the keywords. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि autocratic could have been underlined. Okay, to curb the activities could have been underlined. Imposed censorship underline हो सकता था. तो ये underline अगर होता है keywords तो वो और ज्यादा enhance करता है हमारे presentation को. फिर यहाँ पे liberalism वाला आंसर 5 मार्कर क्वेश्चन. कैन यू सी ये एग्जाम्पल वर्ड अलग से. अब ये एग्जाम्पल वर्ड को भी अंडरलाइन हो सकता था या ये बॉक्स में जा सकता था. ऑफकोर्स द प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा, बट और अगर उसको हमको एनहांस करना है, या ये वाले पर्टिकुलर स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी है बट सब स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती, एवरेज भी रहती है, राइट. तो वो एवरेज हैंडराइटिंग वाले भी अगर हम हैं, इट्स ऑलवेज बेटर इफ वी अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ओके, सो प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में आई विल शेयर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का पेपर विथ एवरेज हैंडराइटिंग्स बट बेटर presentation. Okay, let's move ahead. ये वो development is a mix of goals. यहाँ पे देखा एग्जाम्पल लिखा हुआ है फार्मर, ट्रेडर, टीचर वगैरह वगैरह. So that's it, the question paper. And this paper is of one of the student named Harshal Tawati. And I am sure that many of the students in this session scored 20 plus marks. 25 and 25 वाला कोई है? Can you raise your hand? 20 up वाले student raise कर लो. चलो, Arush had scored 25, I remember. So that's very good. 20 plus वाला और कौन कौन student है? Can you please raise your hand? Very good. है 4 5 6 students. Okay. So if you are one amongst the students जिन्होंने 17 18 या 17 18 से कम स्कोर किया है इस पर्टिकुलर पेपर में, you need to work hard because content was बहुत ज्यादा easy. एंड हमने जो स्टडीज मेड सिंपल नोट्स प्रोवाइड किया है मोस्टली उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर एंड लर्न द आंसर्स फ्रॉम दोज नोट्स. एंड एक बार उन नोट्स से अगर हम आंसर्स पढ़ लेते हैं एंड देन व्हेन यू गो टू द टेक्स्ट बुक यू रियलाइज कि सारा टेक्स्ट बुक तुमको आता है, तो वो पैराग्राफ वाइज ही हमने सारे नोट्स में आंसर्स कवर किए. ओके, तो अभी let me have a look at the chat box. If there are any questions, I will answer them. I will switch off my video as of now. In the meanwhile, you can send your queries in the chat box. Thank you so much and all the best for the rest of the exams.